वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहें, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, माय प्रीवियस लेक्चर इज ऑन साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमने सीखा था। आज पार्ट 3 में हम सीखने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, dx अपॉन p equal to dy upon q equal to dz upon r, where p, q and r are the function of x, y and z. सो इनके सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है? हम अगर टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हैं गिवन इक्वेशन के, वो इस फॉर्म में हो u1 xyz equal to c1 and u2 xyz equal to c2। इंडिपेंडेंट का मतलब है दोनों में से कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। और c1 और c2 क्या है? हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और किसी भी एटलीस्ट वन ऑफ देम, ये u1 या u2 में से z जरूर आना चाहिए। तो ये जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं मिलके वो क्या कहलाते हैं? गिवन इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब हमारे पास कुछ रूल्स है सॉल्यूशन लिखने के लिए। फर्स्ट रूल है, व्हेन वन वेरिएबल आर आइदर एब्सेंट और कैंसल आउट बाय टेकिंग एनी टू पार्ट्स, यानी इक्वेशन के 3 पार्ट्स में से किसी भी 2 पार्ट को लेने पर एक वेरिएबल कैंसिल हो रहा हो या एब्सेंट हो। देखते हैं इसको क्वेश्चन की हेल्प से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं इसमें से टेकिंग द फर्स्ट टू कर रही हूँ। टेकिंग द फर्स्ट टू को लेने पर हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू dy upon xz x square and y square dy. Integrating both the sides, we are having x cube minus y cube equal to c1. This is the first solution, equation number 1. This is of the form uxyz equal to c1. This is your u1, first solution. For the second solution, मैं ले रही हूँ फर्स्ट और थर्ड को, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बाय टेकिंग फर्स्ट and third part. What we are getting here, x dx upon y square z equal to dz upon y square and y square get cancelled, and you can easily integrate now. X dx equal to z dz, integrating, this is x square minus z square equal to c2, equation number 2. Hence इक्वेशन 1 एंड 2 हमको कंप्लीट सॉल्यूशन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, सपोज टू बी, यानी हम जो तीनों पार्ट दिए होने हैं उनमें से एक ही सॉल्यूशन ऑब्टेन कर पाए, दो सॉल्यूशन नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हो इजीली, तो जो हम फर्स्ट सॉल्यूशन है उसी का सेकंड सॉल्यूशन में यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे स्टूडेंट, बाय टेकिंग फर्स्ट टू। अगर हम फर्स्ट टू को ले लेते हैं तो dx, ये 3dx हो जाएगा इक्वल टू dy ऑन इंटीग्रेटिंग, वी आर हैविंग 3x plus c equal to y. So y minus 3x equal to c, or you can take it as this is the constant, this is the first solution, and we are using this first solution in here y minus 3x. We are replacing y minus 3x as a constant here and taking along the first, taking first and last part, and using equation 1, that would be equal to dx upon 1 equal to dz upon हमारा हो जाता है स्टूडेंट 5z प्लस tan c। tan c तो कांस्टेंट है, लेकिन 5z का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 5। तो नीचे वाले टर्म को, यानी डिनोमिनेटर के जो आपका डिफरेंशिएशन है वो ऊपर दिखने के लिए मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो यू कैन सी हियर the differentiation of denominator at the numerator. So we are integrating, on the integration we are obtaining log 5z plus tan c, and we are adding here log c1 as a constant of integration, that would be equal to log 5z plus tan
C upon C1 equal to e raised, it is 5x, and when you eliminate the log, it is e raised to the 5 power 5x, and C1 e raised to the power 5x equal to 5z plus 10c, or you can divide it, e raised to the power minus 5x into 5z plus 10c. This is your second solution. So equation 1 and 2 gives complete solution. इक्वेशन 1 और 2 से हमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है. नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट रूल में हमारा जो रूल है वो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द पार्ट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. यहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों पार्ट्स किसके इक्वल रहेंगे. अगर यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट ले लें हम L1 M1 और N1, L1 x dx प्लस M1 dy प्लस N1 z dz अपॉन में आपके पास रह जाएगा L1P plus M1Q N plus N1R. सो M1 L1 M1 N1 को हमको ऐसा चूज करना है कि डिनोमिनेटर पे क्या बन जाए, जीरो बन जाए, और न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए जिससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सके. सो यहाँ पर हम टेकिंग द कोफिशिएंट x माइनस वाई एंड माइनस जेड. एक्स माइनस वाई माइनस जेड लेने पर स्टूडेंट आपका डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में आ जाता है, एक्स जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई, सॉरी, और यहाँ पे भी एक्स डी एक्स और माइनस वाई डी वाई एंड माइनस जेड डी जेड अपॉन माइनस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस वाई equal to dy upon z x minus y equal to dz upon x square plus y square. So on simplifying, this is x dx minus y dy minus z dz, and what we are getting at the denominator, this is x square z, and this is x square z. Negative and negative get cancelled. This is plus xyz, this is minus xyz get cancelled here, and this is minus minus plus y square z and minus y square z. So at the denominator we are having 0 here. So whatever be your right hand side, it would become 0 when you times it with the 0. यानी जो भी हमारा राइट हैंड साइड है वो जीरो हो जाएगा अगर हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड इज इट इक्वल टू जीरो, एंड ऑन इंटीग्रेटिंग वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर minus y square minus z square equal to 7. This is the first solution, and the given equation student is dx upon z x plus y equal to dy upon zx minus y equal to dz upon x square plus y square. Taking y, x and minus z as coefficients, ये कोफिशिएंट लेने पर हमारा क्या बन जाता है, y dx प्लस x dy minus z dz, and at the denominator yz into x plus y and plus xz into x minus y and minus z into x square plus y square. और राइट हैंड साइड में आपकी जो भी तीनों में से कोई भी टर्म चल रही है तो देखते हैं. यहाँ पे प्लस का एक्स वाई जेड एंड दिस इज माइनस एक्स वाई जेड गेट कैंसल हियर, एंड प्लस वाई स्क्वायर जेड एंड दिस इज माइनस वाई स्क्वायर जेड, and plus x square z, this is minus x square z.
So y dx plus x dy minus z dz अपॉन जीरो। यानी स्टूडेंट हमको ऐसे कोफिशिएंट लेना है कि डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए, उससे सामने वाला पार्ट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा और न्यूमरेटर को हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो दैट इज y dx प्लस x dy माइनस z dz इक्वल टू जीरो। और इसको हम लिख सकते हैं इन दो टर्म को मर्ज करके डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई माइनस जेड डी जेड। सो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा और माइनस का जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी टू। दिस इज योर सेकेंड सोल्यूशन। सो इक्वेशन 1 and 2 gives complete solution. Next question we are taking here, dx upon cos x plus y equal to dy upon sin x plus y equal to dz upon z. Adding and subtracting. This is the second. Next question, student. In the next question, we are adding first two terms and subtracting first two terms. Cos x plus y plus sin x plus y and equal to, we are taking subtraction here, dx minus dy cos x plus y minus sin x plus y. We are taking this term to the left hand side, cos x plus y minus sin x plus y upon cos x plus y plus sin x plus y dx plus dy equal to dx minus dy. आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि जो आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है वो आपको न्यूमरेटर में एज इट इज दिख रहा है, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन और साइन का कॉस। तो हम इंटीग्रेशन में क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं, लॉग कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई and equal to x minus y plus log c1. So that means e raised to the power y minus x, log eliminate करने के लिए, to eliminate, यहाँ पर हमने पहले तो माइनस में लगा दिया c1 को, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा लॉग के साथ और x माइनस वाई, लॉग को एलिमिनेट किया, ई पार्ट x माइनस वाई हो जाएगा इंटू c1 और cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई और इसका डिवाइड दे दिया e की पार्ट x माइनस वाई का, अगर हमने तो यहाँ पर हो जाएगा e की पार्ट y माइनस x at the numerator equal to c1. This is your first solution. The given equation is dx upon cos x plus y equal to dy upon sin x plus y equal to dz z. So we are taking the sum of the first two, dx plus dy equal to cos x plus y plus sin x plus y equal to dz upon z. So we are timesing both the side denominator with the 1 upon root 2 cos x plus y plus 1 upon root 2 sin x plus y. 1 upon root 2, that is root 2 dz upon z.
So we can take it here. This is can be taken as sine pi by 4, and this is cos pi by 4. Sine pi by 4 cos x plus y plus cos pi by 4 sine x plus y equal to root 2 dz upon z. This is the formula of sine a plus b. So we can return it. इसको ये आपका साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 a प्लस बी कर दिया रूट 2 डी जेड ओवर जेड. साइन को रिवर्स में लिखेंगे कॉसेक एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 डी एक्स प्लस डी वाई एंड इंटीग्रेट root 2 dz over z. So that would be equal to log tan x by 2. That means x plus y divided by 2 and pi by 8 is that, plus log c2 we are adding as a constant of integration root 2 log z, and that would be equal to c2 equal to root 2 z into cot of x plus y by 2 plus pi by 8. This is equation number 2. Equation 1 and 2 gives complete solution. स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.